अपना और काफ़ी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके थे रिएक्ट पे। तो इसको आगे बढ़ते हुए अब हम लोग रिएक्ट में जो है अपने न्यू चैनल में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन चीज़ों को काफ़ी इन डेप्थ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेरे चैनल जो है उसमें थोड़ा बड़ा है पिछले चैनल में, तो मैं सारे कंटेंट को न्यू चैनल में मूव करूँगा। तो अभी दोस्तों उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, सो काफ़ी स्लोली स्लोली। तो आप लोग ओल्ड चैनल में भी देख सकते हो कंटेंट, अभी वहाँ पे लाइव है, बट मैं जो कंटेंट है उसको अपने न्यू चैनल पे ऐड करूँगा धीरे धीरे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके पहले जो मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे न्यू बढ़ के, थिंग्स। तो हमारे जो लेट्स करेंगे कंपोनेंट बेस्ड न्यू आर्किटेक्चर थिंग्स। क्या तो होता है रिएक्ट में, लेट्स रेंडरिंग क्या होता करेंगे है रिएक्ट में, न्यू थिंग्स। स्टेट्स तो क्या होते हैं रिएक्ट में, एरो लेट्स फंक्शन क्या होता है करेंगे रिएक्ट में। न्यू तो थिंग्स। ये सारे तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेट्स तो करेंगे अभी के लिए न्यू थिंग्स। थैंक यू, तो धन्यवाद। आप लाइक करें, लेट्स सब्सक्राइब करेंगे करें न्यू और थिंग्स। मोटिवेट तो करें, और श्योरली लेट्स करेंगे आई विल न्यू कम विथ थिंग्स। तो very good लेट्स and करेंगे more interview न्यू questions will, थिंग्स। तो so that it will be helpful for लेट्स you करेंगे to crack the न्यू थिंग्स। interviews तो and get the लेट्स job. करेंगे Thank you. न्यू थिंग्स। Thank तो you very much for. लेट्स करेंगे। So let's get started guys. So जैसा कि React is like widely used nowadays. So like so let's understand why React is used widely nowadays. So the React is basically is a combination of component-based architecture and virtual DOM declarative syntax, and its large ecosystem of tools and library has made it popular choice for building dynamic and scalable user interfaces. So basically, it's a component-based architecture, and React follows a component-based architecture which allow developer to break down the user interface into small and reusable component. So this modular approach make it easier to build and maintain complex UIs, as each component can be developed and tested independently. So like due to virtual DOM, React uses a virtual DOM, DOM in the sense like document object model. So which is lightweight and a copy of virtual DOM. So React efficiently updates and renders only the component necessary and corresponding virtual DOM elements, resulting in fast and most effective UI components. So due to that, it's faster. It becomes faster. React uses a declarative syntax which means developer and describe what the UI should be on the based on the current state, and React takes care of updating UI to match the desired state. So this that is why React is used nowadays. सो अब हम लोग समझते हैं कि रिएक्ट का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो बेसिकली आपने रिएक्ट का एडवांटेज देखा होगा, बट डिसएडवांटेज नहीं देखा। बट रिएक्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे डिसएडवांटेज पूछता है तो आप बता सकते हो कि while React is a powerful and widely used framework, there are some potential disadvantage also of it, like it has a lack of official guidelines. React itself is a library, so not a fully occupied framework. While it provides the core feature for building UI component, it doesn't come with a built-in guideline. The main problem is that. And performance concern with a large application, suppose somebody has developed an application, so it will become very tough to find due to lack of guidelines, and the code is so lengthy. In that situation, it becomes very difficult to debug and understand and fix the issues. So carefully, while React DOM helps optimizing rendering performance, it may be still encounter performance issue with a large and complex application.
तो जहाँ पर बहुत ही बड़ा एप्लीकेशंस होता है वहाँ पे बहुत ही इशू होती है। अगर किसी डेवलपर ने वो कोड पहले लिखा हुआ है और आपको उसको फिक्स करना है तो इस केस में वो बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज को फॉलो करता है, जावास्क्रिप्ट ES6 को। जावास्क्रिप्ट centric approach है इसमें। React is primarily used based on JavaScript, which poses challenge for developer who prefers programming language. Although React can be used in TypeScript, still it still relies heavily on the JavaScript concept. So that is the main problem. While the code length got increased, the complexity also got increased. So अगर ऐसा आप बोलते हो इंटरव्यूअर को, तो yeah, he can understand that you are aware like what are the big challenges come across while working with ReactJS. Those are disadvantages of ReactJS. So let's move on to next topic. So the next topic is the difference between Angular and React. Angular and React both are JavaScript framework for building web application, but they differ in several aspects. Like Angular is complete opinionated framework developed by Google, and it follows MVC architecture. It provides comprehensive set of features and tools out of the box, including a powerful implementation system, dependency injection, and built-in order. Well, React is JavaScript framework developed by Facebook. It focuses on view layer and application follows a component-based architecture. React uses a virtual DOM to implicitly update and render component based on the changes in the data, where Angular is primarily with written in TypeScript, and which is statically typed superset of JavaScript. TypeScript adds static typing and object and programming features in Angular, where React is primarily written in JavaScript. It can be used for both TypeScript and JavaScript. React doesn't enforce any specific language. Allow developer to choose the language that suits best for their preference and projects. सो आज का ट्यूटोरियल हम लोग यहीं पर रखते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा रिएक्ट्स और एंगुलर में डिफरेंस। अगर लाइक किस तरह से रिएक्ट एंगुलर से डिफरेंट है, देन वी विल कीप ऑन मूविंग। और आगे के ट्यूटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे